Good afternoon, everyone. So, what were we doing? The tropical cyclones. ओशनोग्राफी को टाइम है अभी. So I told you how the naming of the tropical cyclone is being done. So कुछ prelims के लिए note down some of the important points for the naming of the tropical cyclone. कौन सा? अच्छा आ चुका है, आया. आजकल मेरा नसीब अच्छा चल रहा है. Whatever I teach you उसके बाद हिंदू में आता है. So काश मैं छपवा लेता हिंदी. अच्छा. So that is good then. GM modified crops also came. The genetically modified artificial plants also came. So you remember the points which come in this Hindu. और हिंदू से पेपर बनेगा. That's my guarantee. हिंदू के बाहर पेपर नहीं बनेगा. ये PIB वो सब वैल्यू एडिशन है. ये मतलब पूरा सज गया सब कुछ. तो PIB is like lipstick, foundation. Base is Hindu. So and उसके बाद ये mint वो सब for mains. So mint वो सब सिर्फ शादी के लिए, मतलब मेंस के लिए. बाकी डेली के लिए it has to be Hindu. Fine. So you can take down. The naming started in 1999. The naming started in 1999. In Indian Ocean, in the Indian Ocean region, naming started in 1999 in the Indian Ocean region. In this region, Indian Meteorological Department issues cyclone advisory to 8 countries. These 8 countries are arranged in alphabetical order, and they are Bangladesh. Take down the list. Indian Ocean region में कौन सी countries है? बांग्लादेश के बाद इंडिया. ये सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैं दे रहा हूँ उसी सीक्वेंस में ही है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले बी आएगा, सो बांग्लादेश. उसके बाद सी आएगा, डी आएगा, बट देयर इज नो कंट्री विद डी ई एफ एच, सो आई आता है. सो इंडिया सेकंड नंबर पे इंडिया. थर्ड नंबर पे बाकी कोई कंट्रीज नहीं, डायरेक्टली एम पे है. अब एम पे 2 कंट्रीज हैं, मालदीव्स एंड म्यांमार. सो विच विल कम फर्स्ट? मालदीव्स, बिकॉज ए कम्स फर्स्ट अदर देन वाई. सो Maldives, this is what is known as an alphabetical order, and then Myanmar. Maldives, Myanmar, फिर Oman, Oman. After that Pakistan, Sri Lanka and Thailand. श्रीलंका एंड थाईलैंड. सो फिताई किसने नाम दिया? थाईलैंड ने. इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा फानी, FANI. दैट इज इट विल बी द नेम ऑफ बांग्लादेश. उसके बाद जो आएगा इंडिया का नाम आएगा, उसका नाम है वायु. सो इंडिया के नाम है सागर, वायु, मेघ, आकाश, बिजली, लहर.
सो उसके बाद नाम आएगा मालदीव्स का हिक्का, उसके बाद नाम आएगा कहर म्यांमार का, उसके बाद ओमान का नाम आएगा महा, आफ्टर दैट पाकिस्तान का नाम आएगा बुलबुल, देन आफ्टर दैट इससे पहले पाकिस्तान का नाम था तितली, उससे पहले जो इंडियन ओशन रीजन में आया था पाकिस्तान हैड गिवन द नेम वर्दा, उससे पहले पाकिस्तान ने नाम दिया था नीलूफर। उसके बाद सोफा, सोबा विल बी द श्रीलंका का नेम, एंड लास्टली एम्फान विल बी थाईलैंड का नेम। सो यू जस्ट नो नीड ऑफ रिमेंबरिंग द नेम्स। ये नाम है 64th, लिस्ट विल एंड, दैट इज द फिताई इज 68th नेम। वी हैव बीन यूजिंग दिस नेम अगेन एंड अगेन। अगर फिर से साइक्लोन आता है तो नेम कैन बी यूज्ड और न्यू नेम कैन बी देयर। Who can give the name? Even you can contribute to the name. You have to go to the IMD ka website and you can contribute the name. Name may be selected or name may not be selected. Fine. So one last statement. Based on this country, based on the alphabetical order, if a cyclone originates anywhere in the Indian Ocean Basin region, the first name will be given by Bangladesh. Followed by India, Maldives, and so on. Now, second question is, why east coast of India is more prone to tropical cyclones? See, we have done in geomorphology, I generally tell you which is the most dangerous volcano in the world. Krakatoa. So last time जब वो erupt हुआ था तो there was ice age on the world. It stopped the sunlight. परसों जब वो erupt हुआ तो there came tsunami. This is Mount Krakatoa. So इससे पहले it had erupted much earlier during the Jurassic period. अब तब तक वो dormant था. It was, we don't have any recent history of Mount Krakatoa ka eruption except day before yesterday when Mount Krakatoa underwent eruption and we have Indonesia ka tsunami. So have you seen that is also Mount Krakatoa only, Sunda Strait region में. कहाँ पे है Mount Krakatoa? Sunda Strait region. So what is that? Indian plate and Pacific plate, Indo-Pacific plate के region में है. So that means Indian plate is becoming very active. इसीलिए कुछ दिनों पहले research भी आया था that India में there will be a very strong earthquake which may be more than 8.2 on the Richter scale in the diameter, in this magnitude. Have you seen that studies? In the North India is much prone to the earthquake और बहुत दिन से कोई earthquake नहीं हुआ है, इसलिए there is a chance of very strong earthquake as the energy is being built up. As this energy is being built up, there will be sudden release of energy and that will result into earthquake. So you can see how Indian plate is getting active. जब से हमारा क्लास शुरू हुआ है इंडोनेशिया में, इससे पहले अर्थक्वेक्स लॉम्बोक आइलैंड पे, उसके बाद और एक अर्थक्वेक एंड अब सुनामी. अब धीरे से मीन्स इंडियन प्लेट नीचे से तो ओशियनिक प्लेट को इट इज पुशिंग, बट बोथ द प्लेट्स बीइंग कॉन्टिनेंटल स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, पुश नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली द एनर्जी विल बी सो दैट इट विल इंडियन प्लेट में पुश इन बिलो द यूरेशियन प्लेट एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द शेकिंग ऑफ द अर्थ. फाइन विद दिस? मंडी कुल्लू रीजन, देयर इज अ चांस इन नेपाल आल्सो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है वो हम पता लग सकते हैं बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर हीट दैट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. बट यू कैन नॉट स्टिल प्रेडिक्ट एग्जैक्ट डे टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक. आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ पे एपिसेंटर होगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डे एंड टाइम. सो आपने वीडियो देखा होगा, रॉक कॉन्सर्ट इज गोइंग ऑन एंड सडनली
सुनामी आ जाता है पीछे से. So, and ये जो परसों वाली सुनामी है, एक फेमस वीडियो है उसका विच इज़ गोइंग वायरल, दैट इज द रॉक्स कॉन्सर्ट इज गोइंग ऑन. यू कैन से कोइंसिडेंटली वो जो रॉक स्टार है वो स्टेज से पीछे हटता है, पीठ दिखाता है और ऐसे ऐसे करता है और वहाँ से डायरेक्टली सुनामी आ रहा है. सो यू कैन सी दैट हैज हैपेंड इन द this concert. So you cannot predict the forces of the nature. So why there are more tropical cyclones on the east coast? Why east coast is more prone to the tropical cyclones? Because most of the tropical cyclones originate in the Bay of Bengal. Ab question hai, why does the most of the tropical cyclones originate in the Bay of Bengal? Answer is because it is generally more warmer. Question is why it is more warmer? Because it is more enclosed as compared to the Arabian Sea. Secondly, Arabian Sea में the winds are very strong. So when the winds are very strong, there is a vertical up and down motion of the wind. Wind जब आती है तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी. And as a result of when the wind is very strong, when there is a vertical wind shear, tropical cyclones के लिए it does not require a vertical wind shear. Wind ऊपर नीचे नहीं कर सकती. Tropical cyclone के लिए the wind has to just go upwards. And इसीलिए Arabian Sea में there are less tropical cyclones as compared to the Bay of Bengal. Getting it? Because vertical wind shear is very high, मतलब winds किसी भी direction में आ रही है, कभी भी ऊपर जा रही है, we cannot predict. Therefore, tropical cyclones also do not originate in the southwest monsoon season. So what you should remember for prelims is vertical wind shear is good for tropical cyclones or a bad condition. Bad condition. There should not be vertical up and down motion of the wind. इसलिए हमने किया था हाई प्रेशर होना चाहिए कंटिन्यूसली, सो दैट जो भी विंड ऊपर जाएगी इट इज टेकन एंड थ्रोन अवे. सो shear means up and down movement. Turbulence नहीं होना चाहिए. There should be only one kind of an movement upwards. Fine. So you take down this in points. The east coast is prone to the cyclones. East coast is prone to the cyclones which develop in Bay of Bengal, which develop in the Bay of Bengal and the Andaman Sea, and the Andaman Sea, and the Andaman Sea. This cyclones after origin, travel northeastwards. क्यों northeastwards? Eastwards तो जाते हैं but they curve. Cyclone कभी सीधा नहीं जाता, they curve upwards. So northeastwards, Coriolis force. So they northeastwards, that is they curve. That is they curve. And hence most of the cyclones which originate in Bay of Bengal and Andaman Sea, approach India. Most of the cyclones which originate in the Bay of Bengal and Andaman Sea approach India. On the other hand, the cyclones which originate in Lakshadweep, and Arabian Sea approach Pakistan, Oman, etc. Second, the cyclones are more in frequency in the Bay of Bengal region, 35% greater than Arabian Sea, bracket में याद रखना, just for your reference, 35% greater than Arabian Sea.
because the Bay of Bengal is more warmer, because the Bay of Bengal is more warmer. Bay of Bengal is more warmer as it is enclosed, as it is enclosed. Totally enclosed नहीं है, तीन साइड से enclosed है. बे मतलब क्या है? एक साइड खुला है, तीनों साइड लैंड है. सो लैंड ज़्यादा गर्म हो रही है एंड लैंड इज ट्रांसफरिंग उसका एक्सेस हीट टू द वाटर. गेटिंग दिस? थर्ड पॉइंट, Arabian Sea is relatively colder. Arabian Sea is relatively colder due to strong monsoon winds. Due to strong monsoon winds. And hence inhibits the formation and intensification of a cyclonic system. Hence inhibits the formation and intensification of cyclonic system. Inhibits the formation and intensification of a cyclonic system. Next point. As the Bay of Bengal, as the Bay of Bengal is connected to the Pacific Ocean, is connected to the Pacific Ocean, connected to the Pacific Ocean. Remnants of typhoons, remnants of typhoons, remnants of typhoons enter the Bay of Bengal, enter the Bay of Bengal after crossing South China Sea, after crossing South China Sea, which intensifies the tropical cyclones, which intensifies the tropical cyclones. Tropical cyclones, question.
So what is the answer for this? You have to choose only one right answer. It is asking that tropical cyclones do not originate. 2015 का क्वेश्चन है ये, राइट? I am showing you the warm currents of the world. Red color are the warm currents of the world. No need of drawing this warm currents. ये सारे warm currents है, मतलब the sea surface temperature is warmer and these are the cold currents of the world. We'll call this current as Humboldt current. We'll call this current as Benguela current. मतलब यहाँ पे the sea surface temperature is colder. क्यों? Because the cold polar water is coming in this region. We'll call this current as a West Australian current. We'll call this current as Canaries current. And we'll call this current as California current. So what is the answer now? They are asking you why it does not develop here in this region, because it is washed by cold currents. So what happens when it is washed by cold currents? Because it is washed by cold currents, the ocean water is colder. As the ocean water is colder, low pressure belt or ITCZ does not shift. So ITCZ कैसे shift होता है? That is the lowest pressure in the world is somewhat like this. ITCZ shift करेगा, but cold current को avoid करेगा. Shift करेगा, again it will avoid the cold current. यहाँ पे it will take the regions of warm current. So जहाँ जहाँ cold current है, you can see the ITCZ is not shifting. If it is going in the southern hemisphere with the movement of the sun, this is how ITCZ का movement is. Only equator पे ITCZ is a straight line, but away from the equator, ITCZ does not shift properly. That is, it does not shift in the regions of cold current. So what is the answer for this now? Answer is C or answer is B. वैसे तो दोनों आंसर राइट है. अगर ऑप्शन रहता both 1 and 2, both the answers are right. But UPSC has asked you to select only the most appropriate answer. So जब हमने conditions लिखे हैं in the formation of tropical cyclone, was the condition written something कि there should be warm current or cold current? नहीं था हमारे condition. So obviously इससे और इससे तो related ही नहीं है. So the choice is between this and this. अब tropical cyclones are generally associated with ITCZ. That is when the ITCZ is away from the equator, जैसे this black lines. Then there is a mixing of air masses, garam air masses, and they become tropical cyclone. अब ITCZ does not shift on the western coast of South America, Africa, and Australia because these are washed by cold currents. इससे क्या होता है? ITCZ does not shift. Question पूछा है why does ITCZ does not shift, or question is why the tropical cyclones do not develop. Question is why the tropical cyclones do not develop. Tropical cyclones do not develop because ITCZ does not shift. Why the ITCZ does not shift? Because they are washed by cold currents. So इसका most appropriate answer is C, because the ITCZ does not shift. नहीं समझ में आया? क्वेश्चन का डिमांड क्या है?
आंसर तो दोनों राइट है, बट क्वेश्चन का डिमांड क्या है, स्पेसिफिकली पूछ रहा है व्हाई साइक्लोन्स डू नॉट डेवलप. Cyclones do not develop because ITCZ does not shift. Tropical cyclones are associated with ITCZ. Conditions properly पढ़ो, इसलिए मैंने बोला था conditions should be by heart. Have we written that tropical cyclones are associated with ITCZ? Yes, we have written this. अब ITCZ does not shift because cold currents are there, and therefore the answer is C. ITCZ does not shift. अगर क्वेश्चन होता why ITCZ does not shift on the western coast of South America, Australia and Africa, the answer would have been B, because the cold currents are there. Question पूछ रहा है why tropical cyclones do not develop, and answer is ITCZ does not shift. So this was the most difficult question out of 2015 prelims exam का. वैसे देखने में बहुत आसान लगता है, but most of the answer keys which gave the answer B, बहुत ही कम आंसर किसने आंसर दिया था C. एंड जब यूपीएससी का आंसर की आई थी फाइनल, तो आंसर उसमें C था, बिकॉज सी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एक तो ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, या फिर कैंसल करके इफ यू आर स्टिल गेटिंग डाउट खुद को पूछो, दैट इज कोल्ड करंट्स के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं होते, तो वेयर डिड आई रीड कोल्ड करंट्स इन द कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, बट ITCZ पढ़ा है. सो व्हाई ITCZ, क्या होता है ITCZ पे? ITCZ पे देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमरस एयर मासेस विच आर वार्मर. ITCZ क्यों होता है? जो गर्म है एरिया, तो ये गर्म क्यों नहीं है? बिकॉज कोल्ड करंट है. So the tropical cyclones is associated with ITCZ or cold currents? ITCZ. So the answer is ITCZ does not shift. एक तो attempt करो ऐसे questions या leave it. But it should not go wrong, because ऊपर से देखा तो answer B लगेगा. But the actual answer is C. There are some of the questions which will in every subject which are going to check you the core fundamentals of this subject. So the answer is ITCZ does not shift. Understood everyone? Getting it? Which one? Canary current. We'll do this current. Oceanography अभी शुरू हो जाएगा. Next point. Why the tropical cyclones do not develop during the southwest monsoon? Wind का direction. Currents are influenced by winds. Why the tropical cyclones do not develop during southwest monsoon? सबसे पहले, सबसे important point. Again, आपका point will be clear. During the southwest monsoon, does ITCZ shift to India? Overcome आता है कि इंडिया के ऊपर या नहीं? During the southwest monsoon, yes. नहीं आएगा तो लो प्रेशर जोन कैसे बनेगा इंडिया में? इफ देयर इज नो लो प्रेशर जोन, देन हाउ कैन देयर बी रेनफॉल इन इंडिया? सो ITCZ शिफ्ट्स टू इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. बट कहाँ पे ITCZ? नियर नॉर्थ इंडिया या इन द ओशंस? नियर नॉर्थ इंडिया. सो नियर नॉर्थ इंडिया ITCZ is there. So convergence of air masses is occurring on the land or in the water? Land. So land पे जब there is a convergence, will tropical cyclones originate? No. क्यों इतना सन्नाटा क्यों है? Checking your basics. Tropical cyclones, do they originate on the land or on the water? During the southwest monsoon, ITCZ कहाँ पे है? Land पे है या water पे है? Land पे है. So therefore, tropical cyclones cannot originate क्योंकि ITCZ is on North India, while Bay of Bengal नीचे है. So convergence of air masses is occurring on north of India, not in the Bay of Bengal region. Plus, जो when the ITCZ हमारे north में है, because ITCZ is in North India, so trade winds southern hemisphere की they cross the equator and become southwest monsoon. North की trade winds Himalayas को cross ही नहीं कर सकती. So there is no convergence, so no tropical cyclones, because converge होनी चाहिए winds. Trade winds of both the hemispheres, when they converge, घूमने लगती है, and as a result of this we have anti-clockwise circulation.
क्या डिफरेंस है बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन? इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन द विंड्स विल कन्वर्ज अलोंग ITCZ, नॉर्थ की ट्रेड विंड्स जो गर्म है एंड साउथ की ट्रेड विंड्स जो गर्म है. आफ्टर कन्वर्जेंस they will go around the low pressure center, and when they go around the low pressure center, this is what will known as tropical cyclone. Fronts पे convert नहीं होगी. This is not a front because दोनों winds same है. अब ये घूमना, this rotation does not occur at the equator, क्योंकि Coriolis force जो deflection के लिए है, it is not there. So इसलिए equator पे भी tropical cyclones do not originate. Getting this? So first point. The southwest monsoon is characterized by strong surface winds, कौन सी surface winds है? Southwest winds. Southwest monsoon ही surface wind है, वो सीजन भी है और वो सरफेस विंड भी है. इट इज द साउथ वेस्ट विंड्स as well as strong upper air circulation, in the form of easterly jet stream. In the form of easterly jet stream. See, this concept will become more clear in Indian geography. Ground पे there is a southwest monsoon and ऊपर there is an easterly jet stream. Easterly jet stream is going over India, but wind है. Which part of India is very hot? Northwest India. So ये easterly jet stream is attracted down because it is attracted towards the low pressure. Fine. As well as जो साउथ वेस्ट मानसून है वो गर्म होती है एंड वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है. एज अ रिजल्ट वी हैव वर्टिकल मूवमेंट एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. कौन सी नीचे आने की कोशिश कर रही है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. एंड कौन सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है? साउथ वेस्ट मानसून. देयरफॉर कैन आई से विंड ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, दैट इज टर्बुलेंस. टर्बुलेंस मतलब वर्टिकल विंड shear, and therefore tropical cyclones cannot originate. Getting it? Southwest monsoon, suppose this is a surface, it is flowing on the surface, it is getting warmer, it is trying to go up. Easterly monsoon, easterly jet stream east to west जा रही है, but वो नीचे आने की कोशिश कर रही है. क्यों नीचे आने की कोशिश कर रही है? Because of extreme heating of the land, and therefore winds vertical बन जाती है, and we call this as an vertical wind shear. So ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. So इसलिए had this easterly jet stream not been there, तो ये wind सिर्फ ऊपर जाती तो we would have got tropical cyclone. But ऊपर there is an easterly wind which blocks the movement of southwest monsoon upwards. इसलिए बीच में कहीं रुक जाती है, makes nimbostratus clouds and gives rainfall. Getting this? Everyone, थोड़ा technical है इसलिए पूछ रहा हूँ. What is happening? Suppose this is our land. Southwest monsoon winds ऊपर जाने की कोशिश करती है, जो easterly jet stream है वो नीचे आने की कोशिश करती है. So as a result of this, there is a upward and downward movement of wind, and we call this as a vertical wind shear. Easterly jet stream 5 kilometers. ये जो फिनोमेना है ये you cannot determine it based on the strength of the wind. अगर साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ऊपर होगा, अगर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ग्राउंड के पास होगा. सो यू कैनॉट डिटरमाइन कि एग्जैक्टली कौन से हाइट पे होगा.
So in the second phase there is relief, rehab, which includes recovery phase. And in the last phase, चार नहीं, तीन ही है वैसे, कुछ डायग्राम में चार दिखाएंगे, किसी में 6 दिखाएंगे, किसी में 3 दिखाएंगे. Why? Because early warning में preparedness भी आएगा, early warning में forecasting भी आएगा. So you can bring that into forecasting and preparedness. And then we should be talking about mitigation. That is lessening the impact. And मैं इसमें next cyclone के लिए preparedness कर रहा हूँ. ये जो फिनोमेना है ये you cannot determine it based on the strength of the wind. अगर साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ऊपर होगा, अगर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ग्राउंड के पास होगा. सो यू कैनॉट डिटरमाइन कि एग्जैक्टली कौन सी हाइट पे होगा. So this is what is an example of an what? Cyclone will strike. You will do early warning, forecasting. उसके बाद cyclone will come and strike. उसके बाद recovery, which includes relief and rehab. उसके बाद once relief and rehab is done, you should be preparing for the next cyclone. गाजा निकल गया, फेताई आ रहा है. फेताई निकल जाएगा, the next one will come. So this is how the cyclone disaster management cycle will be there. अगर इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा. But there will be a tropical cyclone every year. There will be earthquakes anytime. There will be volcanoes anytime. So you should be prepared to face the disaster. You cannot stop the disaster. The only thing is you can lessen the impact and make sure that natural disaster remains a natural hazard. Because natural hazard हमेशा आएंगे. Whether you term it a disaster or hazard depends upon the socio-economic preparedness of the society. कितनी society is ready to face the hazard. Getting this? Cyber attacks कितना भी करो, जब Google and Facebook hack हो सकते हैं, तो आधार और अपने ऑनलाइन वीडियोस ये सब कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी ये करो. तो only thing that can save is continuous monitoring. कितने मल्टीपल लॉगिन आईडीज है, कौन पासवर्ड शेयर कर रहा है. सो बट यहाँ पे यू कैन मैनेज, बिकॉज मनु को मैनेज कर लिया तो फिर सब मैनेज हो जाता है. बट यहाँ पे यू विल हैव टू मैनेज द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. अंडरस्टैंडिंग दिस? सो mitigation is lessening the impact. What is the difference between recovery and mitigation? Mitigation is because it is a cycle. So the next time the cyclone is going to come, so उसका impact should be lessened. Climate change and mitigation. Climate change reality है. We cannot run away from the reality. The only thing is now we should be focusing on reducing the impact of climate change. That is what is mitigation. Recovery and the relief and rehabilitation. Relief is short term. Rehabilitation is long term impact. That is relief. या आपने खाना दे दिया, आपने मेडिकल एड दे दिया, आपने you take them to different places. Rehab is once their farm is gone, तो आपने उनको लोन देना है. Once their house is destroyed, you have to give them the house. Once their family member is lost, you have to give them counseling. You have to give them jobs. For giving them jobs, you have to create new jobs. That is what is rehabilitation. Rehabilitation is always a long-term phenomenon. Relief is a short-term phenomenon. And then we will strike for the, this is how the cyclone disaster management cycle will be. So now again, if you go to the market and buy the disaster management पे जो कोई भी books available है, they are giving the same points सब जगह.
कि खाना दो, मेडिसिन दो, ये सब दो, यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता, यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछता है, क्योंकि जो साइक्लोन्स के लिए करोगे वो हीट वेव्स के लिए नहीं करोगे। हीट वेव्स के लिए you have to do drought disaster management, cyclones के लिए you have to do flood disaster management, tsunami के लिए जो cyclones के करोगे वो you are prepared for stopping the winds, tsunami में winds नहीं, directly waves आएंगे। So each and every disaster will have a separate answer, so don't buy any book on disaster management। अगर वो book है आपके पास तो उसको फाड़ो, उसमें कुछ जला दो या कुछ भी करो, but don't do that disaster management का बुक्स, वो कुछ जरूरत नहीं है उन बुक्स की, क्योंकि वो एक नॉर्मल गाइडलाइंस है, वो आपको भी पता है अर्थक्वेक आने के बाद भागना चाहिए, द टेबल के, तो वो सब एग्जाम में बहुत ही छोटे पॉइंट्स में लिखना है। योर आंसर हैज टू बी साइंटिफिक, साइक्लोन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, विंड रेजिस्टेंट बिल्डिंग, डिस्क्राइबिंग अ जोन बेल्ट या a green belt to stop the mitigation of cyclones. So that is what is meant by disaster management. Understanding? So you can take down. Have you understood this? So the cyclone disaster management includes managing or preparing for floods, comma high velocity winds, as well as storm surges, high velocity wind as well as storm surges. It is broken into following parts. First, early warning and forecasting. So क्या करोगे early warning and forecasting? लाउड स्पीकर लगाओगे कोस्टल है, SMS अलर्ट्स और टीवी अलर्ट्स, रेडियो अलर्ट्स, थोड़ा बढ़ा दो, टीवी अलर्ट्स, रेडियो अलर्ट्स, क्योंकि you have to think as a district magistrate, you will have to think at all the lines. ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम है, कलेक्टर का काम है डिजास्टर मैनेजमेंट। यू आर डूइंग, लाउड स्पीकर लगा दिए, पता चला बिजली ही नहीं है लाउड स्पीकर के लिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। पता चला कि लाउड स्पीकर जिस खंबे पे लगा दिया वो खंबा ही लेके लोग भाग गए। सो ओवर द ईयर लाउड स्पीकर इंडिया में चोरी हो जाते हैं। यू शुड नो दैट। सो व्हेन हम ट्रेन के अंदर टॉयलेट का मग नहीं छोड़ते, तो यू कैन थिंक अबाउट द लाउड स्पीकर दैट कैन हैपन इन इंडिया। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग एन इन्वेंटरी, टेक इट इन पॉइंट वाइज, प्रिपेयरिंग एन इन्वेंटरी ऑफ साइक्लोन प्रोन regions, by looking at the historical records, of frequency and timing of the tropical cyclones, That is, अगर ऐसा नहीं है, जुलाई में frequency. So if you are in Orissa, you should know कि whether it is southwest monsoon, फिर भी यहाँ पे tropical cyclone can come. But if you are in Andhra Pradesh, you should not worry about that. So preparing an inventory. Inventory is list. Second, monitoring the development of depressions. Monitoring the development of depressions originating in the Indian Ocean region. हम इंडिया ज्योग्राफी के हिसाब से आंसर लिख रहे हैं, originating in the Indian Ocean region.
Monitoring the depressions also includes. Monitoring the depressions also includes. Also includes monitoring of variations in the wind speed. Monitoring of variations in the wind speed. Monitoring of variations in the wind speed. विंड कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं, क्योंकि जाके कोई डिप्रेशन ओशन में तो कैलकुलेट नहीं कर सकता. रिमेंबर इट इज नॉट अ लैंड. मॉनिटरिंग ऑफ विंड स्पीड and changes in the ocean water temperature. Changes in the ocean water temperature. Changes in the ocean water temperature. Fine. Next point. और क्या हो सकता है? How we are going to monitor? डिप्रेशन मतलब साइक्लोन जब ओरिजिनेट होता है 60 किलोमीटर से कम विंड स्पीड. व्हाट कैन बी डन अदर देन दैट? यूजिंग IRNSS सैटेलाइट सिस्टम. यही तो क्वेश्चन था इस साल मेंस का. आंसर आपको मेंस के क्वेश्चन में ही मिलेंगे. यूजिंग IRNSS सैटेलाइट सिस्टम और रीजनल सैटेलाइट सिस्टम टू spot or identify the depressions or cyclones as well as their direction of movement. As well as direction of the movement. As well as direction of the movement. Next. Once a cyclone originates, there should be proper communication to the local population. There should be proper communication to the local population using electronic media. Using electronic media, comma, social media, comma, community radio channels, as well as the print media. Print media सबसे end में, as well as the print media. क्योंकि एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपने नोटिस देने बोला न्यूज़पेपर को कि साइक्लोन आज रात में आ रहा है, न्यूज़पेपर कल सुबह 5 बजे आएगा. अंडरस्टैंड? देयरफॉर प्रिंट मीडिया सबसे स्लोएस्ट फॉर्म. द बेस्ट इज सोशल मीडिया. बट सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम है कि लोग खुद का साइक्लोन ना बनाए. दैट इज दे डोंट इंडल्ज इन गॉसिप्स कि ऐसे ऐसे साइक्लोन आ चुका है. फाइन. द टीवी channels should run news strip even in news strip जो नीचे आती है, news strip even in prime time for the programs which are broadcasted in the cyclone affected regions. For the programs which are broadcasted in the cyclone affected region. इसके लिए हमें law change करना पड़ा. I told you in the last disaster that the private news channel were not ready to run a news of tropical super cyclone क्योंकि उनका revenue खराब हो रहा था. उन्होंने already स्टार, for example, स्टार में आप कोई सीरियल देख रहे हो and now government says कि आप साइक्लोन की वार्निंग दो या टेररिस्ट की वार्निंग दो. तो न्यूज़ चैनल इनिशियली या न्यूज़ चैनल या इवन द टीवी सीरियल्स, जरूरी नहीं हर कोई न्यूज़ देखता है पर टीवी सीरियल हर कोई देखता है. टीवी सीरियल्स डिक्लाइन सेइंग दैट ये हमारा प्राइम टाइम है एंड वी इफ यू वांट दैट टू बी फ्लैश्ड यू हैव टू पे अस द मनी. ऑब्वियस है गवर्नमेंट से, दे आर एन प्राइवेट प्लेयर, व्हाई दे आर कंसर्न्ड, क्यों अपना रेवेन्यू लॉस करेंगे.
So they were not ready to lose the revenue. कि they have taken an advertisement from XYZ company और अब government of India कह रहा है कि ये news flash करो. So that they were not ready to do. But अभी law change होने के बाद it is compulsory on all the news channel. No doubt government has to pay them. ऐसा नहीं कि free में कोई करके देगा. Government has to pay them. The big corporate houses, they have to pay them the rate, but at a very nominal rate. Next. For last mile connectivity, for the last mile connectivity, for the last mile connectivity, radio channels play the most important role. Radio channels play the most important role. Radio channels play the most important role, especially community and AM radio channel. Community and AM radio channel. AM मतलब amplitude modified, frequency modified and amplitude modified. So frequency FM ज़्यादा distance तक नहीं जाता. दिल्ली छोड़ोगे तो दिल्ली के FM चैनल्स बंद हो जाएंगे. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो AM है, जिसमें सिर्फ न्यूज़ विविध भारती, वो लास्ट तक आएगा. लेह लद्दाख में भी जाओ, इट विल बी देयर. सो AM शुड बी यूज्ड. एंड गांव में आज भी AM ज़्यादा सुना जाता है. Why? Because they don't have FM. इसीलिए they don't have any other choice. गांव में टीवी नहीं है, बिजली नहीं है, आज भी लोग न्यूज़ सुनते हैं गांव में. एंड जब डिजास्टर होता है तो कम्युनिटी रेडियो ही सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि टीवी वो सब काम नहीं करते. DTH, डिश टीवी ये बारिश आते ही बंद हो जाते हैं इन द नॉर्मल कंडीशन. सो वहाँ पे तो साइक्लोन आ रहा है. सो देयरफॉर इट हैज टू बी कम्युनिटी रेडियो. Community radio is a local radio that has been established. I know I guess you know what is community radio. Community radio, suppose आप किसी कॉलेज में हो तो कॉलेज का खुद का रेडियो चैनल जो ब्रॉडकास्ट करेगा, that is a community radio. And community radio is the most effective radio. इसलिए आज भी हर गांव में community radio है. अब यही NDMA की गाइडलाइंस अगर पढ़ोगे, वो 1980s की है, वो आज भी ये कह रहा है कि ढोल पीटो गांव में. वो जमाने गए हैं ढोल पीटने की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और बुक्स ने वो कॉपी पेस्ट किया है. सो यू डोंट राइट द सेम थिंग्स. इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन नॉट इमेजिन कि कोई गांव में जा रहा है और बोल रहा है साइक्लोन आ रहा है भागो. सो दैट इज नॉट देयर. So therefore the answer has to be in today's realistic, what are the changes that are there. Now during the cyclone disaster, these points are for the pre-disaster phase. During the cyclone disaster, वो तो कॉमन पॉइंट है. They will display the personal NDRF और सब तो आएगा. The focus should be on point number 1, transferring the people or displacing the people. Displacement means transferring the people from lowland to the highland regions. क्यों? To save themselves from floods. Highland regions. Second, distribution of food, medicine, etc. Distribution of food, medicine, etc. इसमें आप खुद लिख सकते हो कि food packets can be dropped by NDRF personnel from the air, etc. So food packets can be dropped from the air, etc. जो कुछ लिखना है, but इतना स्कोप नहीं होता है एग्जाम में. प्रॉपरली लिखो प्री पोस्ट डिजास्टर. बाकी NDRF वो सब अंडरस्टूड है कि ये आम आदमी करेगा नहीं, NDRF ही करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, while the long term relief and rehabilitation, long term relief and rehabilitation
long-term relief and rehabilitation includes helping people rebuild their lives, helping people rebuild their lives, helping people rebuild their lives. By giving them कैसे rebuild करोगे? Yes, by giving them point A, employment, point B, long term interest free, ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म, और अंडरलाइन करो लॉन्ग टर्म. सिर्फ लोन लिखोगे वो सभी कोई लिखेंगे. लोन ऐसे तो नहीं अगले महीने दे दो, इट हैज टू बी कम से कम 10 साल का लोन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री और वेरी लो इंटरेस्ट लोन्स, और वेरी लो इंटरेस्ट लोन्स. दिस कैन बी डन थ्रू, लेके आओ इकोनॉमिक्स इसमें, दिस कैन बी डन थ्रू self-help groups, as well as building sustainable rural infrastructure, through मनरेगा. MNREG के थ्रू उनको जॉब्स दो. कैन एनीवन गो आस्क फॉर अ जॉब इन मनरेगा? मैंने आपको इससे पहले भी पूछा है. और इज इट ओनली फॉर BPL? मनरेगा इज फॉर एनी पर्सन. कल आप गांव के, आपके पास गांव का राशन कार्ड है, जाके मनरेगा में जॉब पूछो, उनको देना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग? इट कैन बी फॉर एनीवन, इट इज नॉट फॉर BPL. मनरेगा में कोई भी जॉब ले सकता है. एनीवन हु lives in rural India can apply for a job in मनरेगा, provided उसका other family member is not getting a job through मनरेगा. Next, मतलब वो उसमें फंडिंग, हाँ फंडिंग लोन्स यही उसमें लिखो. इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब फंड, एड. नेक्स्ट, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. यहाँ से हमारा आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब अलग आंसर सिर्फ इसमें एंड इसमें है, बाकी दिस विल बी सेम. सो डोंट वेस्ट टाइम इन द एग्जाम ऑन दिस. मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. As the cyclone is annual phenomena, is an annual phenomena. Cyclone disaster management and mitigation includes building of first sub point, building of first sub point, cyclone engineered structures, cyclone engineered structures. Can someone tell me what are the cyclone engineered structures? Foundation. What? Floating or what? See, this is wind. Floating है तो वो it will go up. Understand what is the cyclone engineered structure? This is the land. Yeah, this is the sea, and this is from where the cyclone can be coming. So in the regions of highland, this coastal region में obviously the sea level will be very near, and उसके ऊपर there will be region of an highland. In this regions of highland there will be building, which is generally a community building. Community building means it is made by the government.
क्या हो सकती है कम्युनिटी बिल्डिंग? इट कैन बी डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी या तालुका की लाइब्रेरी या विलेज की लाइब्रेरी, डिपेंडिंग अपॉन कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया में. और इट कैन बी म्युनिसिपल काउंसिल का बिल्डिंग, इट कैन बी स्कूल, इट कैन बी एनी हॉल, auditorium which can house 1500 to 1600 people at a time depending upon the population of area. अगर population ज़्यादा है तो maybe 5 to 6000 people at a time, having all the facilities. मतलब long term आपको सोचना पड़ता है when you go to the services, याद रखना. That is why this testing procedure is there. इसमें से कुछ काम नहीं आने वाला services में. वहाँ पे जाके लवासा में आप सब कुछ नया पढ़ोगे. But they are developing your insight in such a way that you are prepared for the role building. You are prepared to face the no matter what, because अंदर जाके a very a big officer is there. You are sitting as a collector. एक public representative आके आपको डांट सकता है, because we are a democracy. So as a result of this, you have to always think in the long term. So what are this? The cyclone engineered structure. They are special buildings made up of concrete and steel, not of wood. And because it is concrete and steel, not everyone can afford it. With the side having low height, facing the coast or facing the winds. So they are designed in such a way, the side view profile of a building will be such कि एक side of the roof will be at a greater height, दूसरा side of the roof will be slanting. क्यों? Because if the wind comes, aerodynamic design will face the winds to go up. And generally, the walls backside of this building, imagine this is the side view, the backside of a building is never straight. It is either triangular in shape, ऐसी शेप होगा बिल्डिंग का, so that there is least resistance to the wind. But अगर triangular shape का बिल्डिंग बनाया, then it cannot house that many people. So the buildings are generally semicircular in shape. Semicircular in shape and with the side of lower height facing the wind or the direction of a coast. And wall कैसी होगी इसकी? Semicircular in shape. So that if the wind comes, there is no resistance. No resistance तो गिरेगी नहीं and the winds will dissipate. Simple mechanics है. Energy cannot be created nor can be destroyed. It can be just transformed from one form to another. Energy खुद से खुद dissipate हो जाएगी. Cyclone is an energy system. तो आप strong होके उस wind को face कर रहे हो और गिर रहे हो, या properly aerodynamically design होके इस energy को dissipate कर रहे हो. So this is what is the dissipation of energy. That is what is known as cyclone engineered structures. कहाँ पे होने चाहिए? Community level पे, not at individual level. जो बना सकते हैं individual level वो बना लेंगे, but हर कोई अपना घर कंक्रीट से नहीं बनाएगा. दिल्ली में आपने देखा है बैंक्स के लॉकर रूम होने चाहिए कंक्रीट के, कभी पूरी बैंक कंक्रीट की नहीं होती, because making this entire thing out of concrete is too costly. So दिल्ली में you just see in the Bank of Baroda की robbery, उन्होंने खुद के लॉकर रूम भी कंक्रीट के लिए बनाए थे, बिकॉज टू सेव द कॉस्ट. सो क्या किया? दिस इज द बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी ने यहाँ पे शॉप ले लिया एंड नीचे से टनल करके इट वेंट टू द, हैड दिस बीन मेड अप ऑफ कंक्रीट तो नहीं टूटता, बट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नॉर्मल ईट का स्ट्रक्चर, सो इट कैन इजीली ब्रेक. सो दिस इज व्हाट इज साइक्लोन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर. Fine, मैं बाद में डायग्राम दूंगा. Just understand what is the cyclone engineered structure. We'll change the diagram a little bit. So take down. These are community buildings. These are community buildings made up of concrete and steel. Made up of concrete and steel. And designed in such a way, that the side with lower elevation, faces the coast. Side with lower elevation faces the coast. This community building is used for evacuation.
This community building is used for evacuation. Community building is used for evacuation and can house large number of people for several days. So obviously कब हाउस करोगे, जब अंदर पूरा खाने पीने का इंतजाम है तो. You should be knowing जापान में कैसे है. अर्थक्वेक इंजीनियर बेड्स वहाँ चला रहे हैं जापान. अर्थक्वेक आएगा तो बेड खुद ब खुद खुलेगी और आप बेड के नीचे चले जाओगे स्टील फ्रेम के. उसके ऊपर रबर बिबल गिरेगा, कोई फर्क नहीं है. बेड हैज अ सप्लाई ऑफ ऑल द चिप्स. जितना 2-3 दिन अगर आप बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं तो यू कैन सर्वाइव. बेड हैज एवरीथिंग. जैसे ही अर्थक्वेक का ट्रिगर आया तो बेड विल ओपन, इट विल कवर इटसेल्फ पूरा स्टील से, तो आपके ऊपर कुछ भी गिरे तो यू आर सर्वाइविंग. एंड देन दैट बेड इज गिविंग आउट सैटेलाइट सिग्नल सो दैट द रेस्क्यूअर्स नो कि यहाँ पे कोई आदमी दबा हुआ है एंड यू कैन इजीली सर्वाइव. That is what is the disaster management. Obviously, इतना technological advancement India में नहीं, but still we can go to some extent like Japan. So, next, the shape of these buildings, shape of these buildings is usually semicircular, so that they don't resist the high velocity winds. Next point. The coastal areas, next point is green belt. The coastal areas which are prone to tropical cyclones, should be strictly termed as no-go. ये technical word है. No-go zones. No-go zones for economic development activities. This area should be converted into green belt. Having following land zone planning. Zone 1 is an intertidal zone. Intertidal zone मतलब between high tide and low tide is an intertidal zone where mangroves should be planted. Because the mangroves through their extensive ये सब prelims के facts भी इसमें है, widespread, underline the word widespread, root system are not easily uprooted by winds.
extensive widespread root system. UPSC ने पूछा था deep root system. मैंने deep लिखा है या wide root लिखा है? Wide. Deep is inside the ground. Wide is lateral. So mangroves are known for lateral root system. Deep root कोई भी पेड़ टूट जाएगा. Mangroves are not known for deep root system. They are known for wide root system. Uprooted. They are not easily uprooted. And hence they protect the coast. Hence they protect the coast against tropical cyclones. Against tropical cyclones, storm surge, as well as tsunamis. As well as tsunamis. Zone 2. Zone 2. Should be the belt of coastal trees. Should be the belt of coastal trees. Underline the word coastal trees. कोई भी ट्री नहीं, वहां पे जाके आम का पेड़ लगाओगे, ऐसे नहीं. It has to be नारियल का पेड़ या डेट पाम. क्यों? You see the shape. Shape इसलिए ऐसे होता है, they have a slender trunk and very pointed leaves, so that leaves are giving least resistance to the speed of the wind. इसलिए कोस्ट में एंड डेजर्ट में सेम टाइप के ट्रीज मिलेंगे. अगर वहां पे बड़ा पेड़ है बरगद जैसा, बानियान टाइप, इट विल रेजिस्ट द विंड एंड अल्टीमेटली द ट्री विल फॉल. यहाँ पे कोस्टल ट्रीज डू नॉट फॉल बिकॉज दे हैव वेरी पॉइंटेड लीव्स व्हिच विल नॉट रेजिस्ट द विंड. सो यू सी डेट पाम, खजूर और कोकोनट, दोनों के leaves are same. So that is an adaptation the trees have made to survive in this kind of an climatic condition. So prelims के लिए दो चीजें याद रखना. Mangroves do not have deep root system, and secondly coastal trees have pointed thin leaves and very thin trunk. Otherwise हो गया branch हो गया coconut का पेड़, it will fall down. It was having very thin. So coastal trees should be planted. Belt of coastal trees having thin pointed leaves should be planted. Having thin pointed leaves should be planted. Such trees resist such trees due to friction reduce the wind speed. Due to friction, reduce the wind speed without getting uprooted. Reduce the wind speed without getting uprooted. Without getting uprooted. Third, zone 3 is a green belt. Green belt, which acts as riparian buffer. मतलब understand what does it mean? It means if there is a flood, if there is storm surge, so यहाँ पे green belt है, grass है, so the grass will take up excess water, and because of excess water नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ये होगा कि there will be recharge of a ground water because the water will percolate downwards. और यही अगर आपने सीमेंट बना दिया तो see the water level will rise. So this green belt acts like a riparian buffer. So groundwater can be used for drinking water, for irrigation, for different purposes, and ultimately nobody is at loss. So Britishers used to do this. The only thing is Britishers यहाँ पे before coming to this area they used to make very very deep canal. There was a canal only along the eastern coast of India. And that famous canal from Orissa to Andhra Pradesh, Andhra to Tamil Nadu, was known as Buckingham Canal, which was parallel to the eastern coast of India. Normal conditions में they used to use it for inland navigation, fishing, and जब excess tsunami या water used to come, excess water used to
fall in that canal and flow out back to the sea before coming into the inland regions. बाकी जो घर है फिशरमैन सबके उनको वो अंदर ले आते थे, बट नो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ऐसे नहीं है कोस्ट व्यू रिसोर्ट या XYZ रिसोर्ट, ऐसे नहीं अलाउड था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। आजकल हम अलाउ करते हैं। वी हैव चेंज द वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017 दिस ईयर। वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स इतने ज़्यादा चेंज हुए दैट इन मुंबई इटसेल्फ बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आई विल टेल यू व्हाट इज दिस वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स बिफोर द प्रीवियस गवर्नमेंट। वेटलैंड मैनेजमेंट वाज अंडर सेंटर, इस गवर्नमेंट ने दे दिया स्टेट्स को। देन देयर वाज वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने उस अथॉरिटी को निकाल दिया। दिस हैज बीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का क्वेश्चन इस साल, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी सॉ that as soon as the new rules came into force, 450 hectares of wetlands in Mumbai were removed. क्यों? Building purpose. And Mumbai में floods बढ़ गए. So this is what the ये आप पूरा निकाल दो, यहाँ पे resort बना दो, so कौन पहले धक्का लेगा साइक्लोन का? Resort, people, house. So this should be a green belt. Acts as a riparian buffer, which will help in reducing the impact of floods, comma, recharge of groundwater, and save life as well as property. The state which has, next point, the state which has properly implemented this, is Orissa. The state which has properly implemented this is Orissa. इसलिए Orissa में deaths have significantly reduced. तमिलनाडु में deaths, केरला में deaths, आंध्रा में 44 deaths. But one of the poorest states of India has properly implemented this. इसके लिए पैसे नहीं लगते, इसके लिए there has to be political will. So Orissa में super cyclone comes and only 10 people die. Normal Fetai comes in Tamil Nadu, hit भी नहीं करता Tamil Nadu, before hitting 50 people die. Getting? Orissa passes near Kerala, that the cyclone Oki passes near Kerala, 95 people die. But 600 kilometers per hour का wind speed, super cyclone Falin comes and hits Orissa and only 10 people die. उससे पहले super cyclone में 1000 people died. क्यों? क्योंकि disaster management act को properly implement किया है ओडिशा में. इसीलिए environment ecology में भीतरकनिका mangroves, चिलिका lake, all this are mostly present in Orissa. Orissa is one of the state which has properly implemented its nature, and therefore the disaster has reduced, except in the inner part जहाँ पे heat wave disaster है. Getting this? On other hand, बाकी के states में सिर्फ foundation stone लगाया गया. That is, Tamil Nadu was supposed to construct a wall 2004 Indian Ocean tsunami में. So वो ईंट की पूजा की गई, उसके बाद ना wall बनी, ना cyclone, ना this was done. Getting this? The same, Kerala thought that it is on the western coast, कुछ होगा नहीं, but 2 साल से the nature is telling Kerala that even you are prone to disaster. So this is why the cyclone disaster management is very, very important. अब you can also include in this, अगर time मिला तो, कि nuclear reactors etc. should not be based on the eastern coast of India, very near to the coast. अगर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अदरवाइज फुकुशिमा जैसा ट्रेजेडी इंडिया में हो जाएगा. अगर जापान के इतना स्ट्रिक्ट इसमें द फुकुशिमा ट्रेजेडी हैपेंस, इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. इसलिए वी डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच इज वेरी नियर टू द ईस्टर्न कोस्ट, बिकॉज इट इज प्रोन टू सुनामी एज वेल एज इट इज प्रोन टू साइक्लोन्स. फाइन. सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट. लास्ट पॉइंट. Yes, CRZ is this. इसी में CRZ is different.
CRZ you should not be doing that strictly, because CRZ varies from state to state, even from region to region. CRZ is not uniform, and that is good for CRZ because Odisha की जो policy है, that same policy cannot be implemented for Kerala coast. That policy cannot be implemented for Mumbai coast. हर एक के problems अलग है. That is a good thing about CRZ. CRZ is decentralized, where the state governments decide what are there. For we are not going to study CRZ in detail. But this is what zone 1, zone 2, zone 3, CRZ. Even at the individual level, people should take following care. One, large overhanging roofs. Large overhanging roof should be avoided in the cyclone prone regions. Large overhanging roof should be avoided in the cyclone prone region. Large overhanging roof should be avoided in the cyclone prone region. That is, घर अगर ऐसा बनाओगे बहुत फैंसी दिखेगा जब तक साइक्लोन है, वैसे ही साइक्लोन आएगा, it will take the roof and go away. So the roof should be this. That is, you should avoid the overhanging roof system, that is just like China या pagoda जैसे you make a long roof. So answer लिखते समय at individual level एक अलग point लिखना है, individual level पे ये दो करना है, क्योंकि जरूरी नहीं everything should come from government. Something has to be coming from people also. Yes. Next, second point, individual bunkers which are 4 to 5 feet above the ground. Should be constructed above the ground. Below the ground रखोगे तो flood का पानी अंदर चला जाएगा. So above the ground should be constructed. 4 to 5 feet. Individual bunkers which are 4 to 5 feet above the ground should be constructed. ये है घर के ऊपर एक बंकर. इन केस साइक्लोन कम्स तो आप वहां तक नहीं जा सकते हो, दूर है, आपके इसमें नहीं है, तो ईच हाउस शुड हैव इंडिविजुअल बंकर, कि अगर साइक्लोन आता है तो छुप जाओ इन बंकर. बिलो द ग्राउंड रखोगे, यही तो, दिस इज टेक्निकल. बिलो द ग्राउंड बॉम्ब जहाँ पे गिरते हैं ज्यादा वहां पे. अब यहाँ पे बिलो द ग्राउंड बनाओगे तो फ्लड्स आएंगे, फ्लड का पानी बंकर के अंदर घुस जाएगा एंड पीपल विल बी ट्रैप्ड देयर. It has to be above the ground only, and this bunker will be made up of concrete and steel. तो पूरा घर आप concrete and steel का नहीं बना सकते. Make the small bunkers. नहीं फर्क पड़ता है, because constant water नहीं होता 4 to 5 feet. 9 feet suddenly आएगा, निकल जाएगा. So these bunkers are designed in such a way that they can stop the storm surge. But it should be always above the ground, not below the ground. Below the ground, understanding cyclones, you have to understand cyclone and tsunami. Below the ground, water will seep in. If you are below the ground, पेड़ टूट के bunker के ऊपर ही गिरा, तो you cannot even escape from the bunker and you are trapped there. So it has to be above the ground. Having one door which will be water resistant. ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे जाना है. This should be entry from the side. क्योंकि ऊपर क्यों नहीं? पेड़ गिर गया आपके ऊपर, तो do you have the strength to remove the tree? No. So side से. Getting this? So that is the cyclone disaster management. Let this diagram come and let the individual points come. मतलब you have to understand कि जब भी question आएगा तो focus should be on the last वाला point. पहले दो points पे नहीं. IRNSS लिखो, underline करो, क्योंकि earthquake में geological survey आएगा. Second, you can skip, अगर time नहीं है तो skip relief and rehabilitation सिर्फ लिख दो, इसमें you have to provide food, medicine, self-help group, etc. And come to the last point, give at administrator level, at individual level.
Can I continue? एंड देखो दोनों पॉइंट्स, दिस लास्ट पॉइंट विल बी एप्लीकेबल इवन टू सुनामी. सिर्फ फर्क ये है सुनामी में विंड्स नहीं है, अदरवाइज इट इज सेम. सो देयर शुड बी कम्युनिटी सेंटर्स एट हाई अल्टीट्यूड. कम्युनिटी सेंटर्स शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे कि दे आर एरोडायनामिक, क्योंकि इंस्टेड ऑफ विंड नाउ द वेव्स विल कम विद ग्रेट स्पीड. एंड फ्लैट है वॉल तो दे विल ब्रेक, सेमी सर्कुलर है वॉल तो दे विल मूव आउट. You have seen this कि कितनी भी स्पोर्ट्स कार इतनी ज़्यादा लो क्यों होती है? So that aerodynamic design should be there. Sorry, before I finish, start with oceanography. एक anticyclones बचा है. Still, I will write this. Important topic for prelims and mains. Don't focus. This is hardly 3 to 4 lectures. 4 lectures will require for oceanography. The easiest of all, क्योंकि इसमें से we can predict कि कहाँ से question आएगा. Question for both prelims and mains will be importance of continental shelf. The second importance will be ocean currents. The most important will be ocean current, because ocean current में we will do El Nino and La Nina. Third will be corals and coral bleaching. Corals and coral bleaching. This you prepare, and the fourth will be ocean acidification. Ocean acidification, and for prelims only, that is only superficial, is ocean bottom relief, किसमें? Anticyclone 1 page. Ocean bottom relief, that is ocean किससे बना है? Continental shelf, slope, continental rise, deep sea plains. That is what is ocean bottom relief. कुछ काम का नहीं है except for continental shelf. Temperature and salinity. So that is all about the. And lastly, इस साल के लिए tides. Tides. So be very specific while studying oceanography. किसमें deep जाना है और किसमें नहीं जाना. Even if you understand these things, go for the exam, more than enough. But you should, because you see, they हर साल corals पे question आएगा. कभी biodiversity related, कभी उनका, and we will find every year the question on ocean currents. फिर करंट में कौन सा टॉपिक है? डेड जोन इन द ओशंस ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन. डेड जोन्स इन द ओशंस एंड ओशन एसिडिफिकेशन. कैन आई रैप दिस पार्ट?
anticyclones. That is the last part of our climate. Not at all important. एक करने के लिए हम कर रहे हैं. In case अगर anticyclone पे आता है, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आएगा मेंस में, एक ही क्वेश्चन आएगा मेंस में, difference between cyclone and anticyclone. So you prepare for this question and that is the answer. Prelims में very simple. What is cyclone? Low pressure या high pressure center? Low pressure. So what is anticyclone? Opposite of cyclone, that is the high pressure center. In this high pressure center, as we go up, the pressure system goes on decreasing. Outside there is a low pressure and inside center there is an high pressure. And because the pressure goes on decreasing, you should understand the pressure difference between this high pressure and low pressure is very, very minimal or very low, and therefore wind speed is very low. So because the wind speed is very low, the winds originate from high pressure to low pressure and they move in such a way that they deflect right in northern hemisphere. And they will deflect to the left in the southern hemisphere. Therefore, we say anticyclones are high pressure centers with central high pressure and decreasing low pressure, and the wind flows in such a way that it is clockwise in the northern hemisphere. Cyclones में कैसा था? Anti-clockwise, while it is anti-clockwise in the southern hemisphere. Proper Coriolis force. कहाँ पे होगा? So high pressure means that, not necessarily always there. So where are these anticyclones formed? जहाँ पे air क्या हो रहा है? High pressure मतलब air नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है. High pressure means air is subsiding. So when the air is subsiding, rainfall के chances है या नहीं है? Clouds? No. Clouds होगा कि नहीं? Clouds नहीं होगा तो no rainfall. No rainfall, so no winds properly. Therefore, we say anticyclone are weatherless phenomena. So anticyclone is always characterized by stable weather, atmospheric stability, fair weather and blue skies. अब कहाँ पे होता है anticyclones? Anticyclones are found either in the subtropical high pressure belt where the air is forced to subside. 5 minutes. Where the air is forced to subside, or it is found in the regions where the air is forced to subside due to cold air, that is polar high pressure belt. Right now, if you want to experience how is the anticyclone, we are under the influence of anticyclone abhi. High pressure. This is what is anticyclone. Dry air conditions, because high pressure are we under the high pressure? Yes, we are under this central high pressure center. Himalayas में बहुत ही ज़्यादा high pressure, but somehow there is an high pressure. And as a result of this, we say that anticyclones are rainless, cloudless phenomena. Fine? So you can take the definition of anticyclone. Anticyclones are high pressure center. Anticyclones are high pressure centers with decreasing pressure outwards. With decreasing pressure outwards. And the air flows in such a way, not air, wind flows in such a way from high pressure center that it becomes clockwise in northern hemisphere, from high pressure center that it rotates clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. Anti-clockwise in the southern hemisphere. We will continue tomorrow. We have to go to the seminar. Anti-clockwise in the southern hemisphere.